Good morning everyone. Today we are going to know about the Puccinia. There are several species of Puccinia. Here we are only going to discuss about Puccinia graminis triticis, which cause black stem rust of wheat. So let's know about the systematic position of Puccinia. It belongs to the division Eumycota. Class is Basidiomycotina. Order Teleomycetes. Family is Uridinates. And the genus is Puccinia. Regarding the occurrence and habitat, it has been found that there are around 700 different species of Puccinia, out of which around 262 they have been reported from different parts of India, and it is known to cause a disease which is known as rust. Different species of Puccinia can cause different kinds of rust. For example, Puccinia graminis triticide. It causes black stem rust of wheat, which is found in the southern part of India. That is in the tropical area. It is very common in the tropical area. Next is Puccinia recondita. The species recondita, it causes the disease which is brown rust of wheat. This disease is common in the central part of India, that is the subtropical part. Another one is Puccinia striformis. Puccinia striformis, that causes yellow rust of wheat, and this is very common in the northern part of India, where the conditions are temperate. Here we are only going to discuss about the black stem rust of wheat, which is caused by Puccinia graminis triticide. So here we are only going to focus on the black stem rust of wheat, which is caused by Puccinia graminis triticide. So let's know about the symptoms first. The symptoms of this disease, it occurs on the stem as well as on the leaf sheath. The symptoms can appear on leaf sheath as well as on stems in the form of large elongated pustules. In the form of large elongated pustules. The pustules can be red in color or orangish brown in color, or it could be
black in color. The symptoms could be black in color or brownish orange in color. They could be. The black color is due to the formation of telutospores inside telutosori. If the color is black, the symptoms are black in color, that black color is because of the formation of a kind of spore which is known as telutospores. Okay, and if you see some orangish brown color spores on the leaf sheath or on the stem, that is because of the formation of uretospores inside uretosori. Sorus is the singular, sori is the plural. So maybe at the same place where the brown color is there will changes to black color because initially they are the uretospores, और same ही place पे we are getting the telutospores. Okay, the spores, whether it is telutospore or uretospores, initially they are formed beneath the epidermis, but very soon the epidermis it ruptures, exposing the spores, and the symptoms gets very clear. Because of formation of these spores, the photosynthetic area of the leaf it decreases, and as it decreases it results in the low yield, shriveling of leaf, poor head formation, and very low seed setting. क्योंकि डिजीज किस पे आ रही है? लीफ के ऊपर आ रही है और स्टेम के ऊपर आ रही है. वीट के अंदर बच्चे what we say that the photosynthesis has to be performed by the leaf as well as by the stem. अगर उसी का photosynthetic area कम हो जाएगा तो क्या होगा? There is less of the food. Less food की वजह से yield कम होगी, shriveling of leaf हो जाएगा, which becomes later brown in color. हेड फॉर्मेशन बहुत पुअर होएगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ जो सीड का सेट होना था, जितने नंबर ऑफ सीड्स बनने थे, ग्रेन्स बनने थे, वो भी कम हो जाएगा. सो दिस इज हाउ इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द यील्ड ऑफ द wheat. नेक्स्ट इज द लाइफ हिस्ट्री. Next is the life history of Puccinia graminis tritici. Puccinia graminis tritici, it is a heteroecious host. What is the meaning of heteroecious? That means it requires two kinds of host. One is wheat, that is Triticum एस्टिवम, एक तो वीट हो गया और दूसरा है बारबेरी. बारबेरी इज बर्बेरिस वल्गैरिस. What I said is that this fungus, that is Puccinia graminis tritici, it cannot complete its life cycle without involving these two hosts. And what are these two hosts? One is wheat and another one is barberry. अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो this fungus cannot complete its life cycle. और ऐसे फंगस जो require two kinds of host, जो different होते हैं, उसको बोलते हैं heteroecious fungus. And the phenomena is heteroism. This is the phenomena. Okay. So what we are going to do over here is पहले हम study करेंगे कि wheat पे कैसे ये grow करता है और फिर barberry पे ये
करता है, ठीक है। वीट में हम बेटा दो चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ यूरेडोस्पोर्स, सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ टेल्यूटोस्पोर्स। बीच में एक स्टेज आती है जो ना बारबेरी पे होती है ना वीट पे होती है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स। और फिर बारबेरी में क्या होता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेगोनिया एंड एसिडियम। एसिडियम में क्या बनता है, एसिडियोस्पोर्स। So we are going to discuss it in a step-by-step manner. First we will take how the fungus grows and what kind of life cycle it completes in case of wheat. Okay. So as I said on wheat, either it will form the uridospores or telutospores. Okay. The primary infection on wheat, प्राइमरी इन्फेक्शन का मतलब सबसे पहले इन्फेक्शन एक हेल्दी वीट पे कैसे आता है, इट अकर्स ईदर बाय द जर्मिनेशन ऑफ एसिडियोस्पोर। एसिडियोस्पोर कहां पे मैंने बताया अभी मैंने, बारबेरी पे, ठीक है। या तो एसिडियोस्पोर जो बारबेरी पे बना है वो आके ग्रो करेगा एंड इट इज गोइंग टू कॉज प्राइमरी इन्फेक्शन, या फिर बाय द जर्मिनेशन ऑफ यूरिडोस्पोर्स। यूरिडोस्पोर्स किस पे बने हैं, किसी एक वीट प्लांट पे, और वो वीट प्लांट क्या करेगा, अपने सराउंडिंग के वीट प्लांट को स्टार्ट्स टू इन्फेक्ट। सो द प्राइमरी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज ईदर एसिडियोस्पोर और यूरिडोस्पोर। ओके, नाउ द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। The vegetative structure of this fungus, it has been found that once it grows inside the wheat, it shows slender, branched, septate, binucleate, dikaryotic mycelium. Dikaryotic, binucleate का मतलब two kinds of nucleus. Dikaryotic का मतलब जो दो nucleus है they belongs to different strains. और septa किस टाइप का होता है Basidiomycotina में? It is dolichosepta. Okay, this type of vegetative structure it has, and it has been found that it grows once it infects the wheat plant. It grows just below the epidermis in the intercellular spaces. It grows in the intercellular spaces just like that, while some of the mycelium out of them can also grow intracellularly. Some of the mycelium it also grows intracellularly, so forming a special structure जिसको बोलते हैं haustoria. And in case of Puccinia, the haustorias are button shaped. Intracellularly कैसे grow कर रहा है? By formation of the haustoria. Haustoria are the places of exchange or absorption
एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यहां से फंगस एब्जॉर्ब करता है फूड फ्रॉम दी होस्ट सेल. These are the chloranchimatous cells of the leaf of wheat, and this is the fungus. This is how the fungus grows. This fungus is growing intracellularly, and during the formation of spores, the mycelium it accumulates just below the epidermis, which leads to the formation of either uridospores or telutospores. So let's now know about how uridospores are formed. Formation of uridospores. Okay, in the early summer, when the wheat has been infected by Puccinia, just before the formation of uridospores, a lot of mycelium it gathers just below the epidermis. जो wheat की epidermis है leaf की, उसके नीचे बहुत सारा mycelium वो it starts to gather just like that, just below the epidermis. During the formation of uridospores, the fungus it starts to accumulate below the epidermis. Okay, now some of the erect mycelium, it forms some erect structure having the two nuclei. This erect structure then undergoes division, forming two cells like this. Out of these two cells, one of the cell which is towards the upper side, it accumulates lots of food, starts to swell up and forms an oval structure which is going to form the spore, uridospore, and the lower one it behaves as the stalk cell. The upper cell it becomes globose, round, and forms the uridospore just like this. Here also what happens, initially the mycelium it gathers, and as I said it forms the uridospores. This kind of structure, and as several uridospores are formed at one place, it exerts pressure on the epidermis, as a result of which the epidermis it ruptures and it hangs just like the collar of the uridosauri. Look, just like this, the host epidermis it ruptures because of the pressure which has been exerted by the uridospores. This uridospores, as a result of which exert pressure and the epidermis ruptures, and these are exposed in the environment. Okay. Now, if you see the structure of a single uridospore, this has a single stalk. This is the stalk which is having
having two nuclei, one cell stalk. The spore is also having two nuclei. It is oval or round in shape. The color is either orange or brown in color, having two nuclei which are of different types, dikaryotic, and it has two walls, intine and exine. The intine is smooth and membranous, whereas exine is sculptured. Exine is sculptured. Here you can see this, it has four germ pores which are at equal distance, one over here and one in the front. So it has four germ pores. These germ pores are the places through which the iridospore it germinates. Okay. So this is how the spores are formed, the iridospores are formed, and as they are formed in cluster, they are called as iridosori. Okay. Once they are formed, the iridospore gets separated from the stalk and then it germinates through any of the germ pore on the surface of wheat itself. The iridospore, it will infect wheat itself. ये wheat पे ही germinate करेगा, ठीक है? And before entering into the leaf, it forms a bulbous structure जिसको बोलते हैं aprosorium. And finally, it enters inside the leaf of a healthy plant. Just like that. Okay? So, wheat के ऊपर मैंने कहा था प्राइमरी इन्फेक्शन या तो इरिडोस्पोर से आएगा या यूरिडोस्पोर से आएगा. तो ये जो यूरिडोस्पोर जो एक इन्फेक्टेड वीट पे ग्रो कर रहा है, ये क्या करेगा, एक न्यू हेल्दी वीट को भी इन्फेक्ट कर सकता है. या फिर एसिडियोस्पोर कहाँ से आया है, बारबेरी से आया है. ठीक है. So this is how the iridospores are formed. Now, how the teleotospores are formed. The teleotospores, they are formed in the same manner. Just like iridospores are formed, same manner में बनेगा, plus same place पे भी बन सकता है. डिफरेंट प्लेस पे भी बन सकता है और सेम प्लेस पे भी बन सकता है. अगर तो यूरिडोस्पोर ने इन्फेक्शन किया है तो कलर क्या होगा, ऑरेंजिश ब्राउन कलर. और अगर टेलियोटोस्पोर्स वहां पे बन रहे हैं तो कलर होगा ब्लैक. ब्लैक स्टेम रस्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द ब्लैक कलर ऑफ द टेलियोटोस्पोर्स. इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट. ओके. टेलियोटोस्पोर्स आर फॉर्म लिटिल लेट इन द समर. Okay, they are formed little late in the summer, and in the same way जैसे यूरिडोस्पोर्स बनते हैं वैसे ही टेलियोटोस्पोर्स बनेंगे. अब यहाँ पे क्या बनेगा, just in the similar way, just before the formation of teleotospores, a lot of mycelium it accumulates below the epidermis. Okay. Now it divides into two cells. The upper cell, it divides into two cells, the upper and the lower cell. The lower cell it behaves as the stalk cell. The upper cell it again divide, फिर से divide होगा और क्या बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसा, बाइसेल्ड स्ट्रक्चर. एक बाइसेल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलेंगे टेलियोटोस्पोर.
स्पोर। तो अगर यहाँ पे आप टेल्यूटोस्पोर देखोगे, इनिशियली इट इज हैविंग 2 nuclei, but soon these 2 nuclei they fuses together, और फ्यूज होने से क्या हो जाएगा, सिर्फ एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस रह जाएगा। ओके, ऐसा slightly pointed or round like this. So what we say that if you see the structure of a single टेल्यूटोस्पोर, अगर एक सिंगल टेल्यूटोस्पोर को देखोगे तो क्या है ये, इट इज अ बाय सेल स्ट्रक्चर, 2 सेल का बना हुआ है। यूरिडोस्पोर कितने का था, सिंगल सेल का था। हर सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है जो डिप्लॉयड है। यूरिडोस्पोर में 2 होते हैं, डाइकैरियोटिक होता है, ठीक है। और नीचे क्या है, इट हैज अ स्टॉक। ओके, स्टॉक के पास भी having 2 kinds of nucleus. Okay, it has 2 kinds of wall layers. एक हो गई एक्साइन, यहाँ पे एक्साइन स्मूथ होती है, the exine is smooth, okay, and one is intine. Intine is membranous, smooth है, membranous. The exine is smooth and is black in color. Because of this black color, the टेल्यूटोस्पोर्स they appear black in color. So अब यहाँ पे कैसा बनाएंगे, it is like बायसेल स्ट्रक्चर। ये जो बायसेल स्ट्रक्चर है ये स्पिंडल शेप के होते हैं। ओके, they are spindle shaped. The upper end is either pointed or round, okay, and this is how they are formed. They are formed either in the same place जहाँ यूरिडोस्पोर थे, या फिर क्या हो सकता है, कहीं नई प्लेस पे सेम ही प्लांट पे बन सकते हैं। okay, once they are formed and they get mature, they are liberated, they get separated from the stalk, they are liberated. और अगर इसमें देखेंगे कि कितने जर्म पोर्स होते हैं, तो you will see that it has, the upper cell has germ pore over the upper side, whereas the lower cell it has the germ pore towards the lateral side. इसका कहाँ है germ pore, lateral side पे है, और upper cell का कहाँ है, upper side पे है। ठीक है, तो जर्मिनेशन कहाँ से होगी, इसकी यहाँ से और इसकी यहाँ से होगी। ठीक है, एंड व्हाट वी से दैट यूरिडोस्पोर तो दोबारा से वीट को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन टेल्यूटोस्पोर इट कैन नॉट कॉज इन्फेक्शन टू दी वीट। ये दोबारा वीट पे ग्रो नहीं करेगा, इंस्टेड इट विल गो फॉर अ रेस्ट पीरियड। ये क्या करेगा, इट विल गो फॉर अ रेस्ट पीरियड ऑफ अराउंड 30 डेज, और उसके बाद ये कहाँ जर्मिनेट करेगा, इन द सॉइल। सॉइल में जर्मिनेट करके इट विल फॉर्म बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, तो अगर पक्सिनिया की बात करें बच्चे, एक तो स्टेज वीट पे है, एक स्टेज बारबेरी पे है, एक इंटरमीडिएट कहाँ पे है, ये जो बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं ये कहाँ पे बनेंगे, बनेंगे ये टेल्यूटोस्पोर से, और बनेंगे ये सॉइल के ऊपर। ठीक है, रेस्टिंग पीरियड के बाद। वंस दिस बेसिडियोस्पोर्स आर फॉर्म, these बेसिडियोस्पोर्स will germinate on बारबेरी। तो बारबेरी को इन्फेक्शन कौन करता है, बारबेरी पे इन्फेक्शन कैसे आएगा, बेसिडियोस्पोर से आएगा, जो कहाँ पे बने हुए हैं, इन द सॉइल। ओके, सो नेक्स्ट, in the next lecture we will discuss about the बेसिडियोस्पोर formation, followed by the rest of the life cycle which is completed in the other host, that is barberry.